Hello everyone, this is Pritam Shah and welcome to my YouTube channel Cognitive Coder. So in this PySpark video series today we will learn how to use StructType and StructField function. Okay, so first we will try to understand why it is required. Okay, so let's go to our notebook. So we have one notebook. Okay, so let's run it. So we got one database. Okay, so if we see its schema, its ID is long, name is string, country is string. Okay, so I'm changing it to any kind of integer. Okay, let me do it first. Any kind of integer you can take and you can mention it. You can mention it as role. Okay, okay. Once again, here is also ID is long, name is string, role is long. Okay, so this kind of this is a short number. We can take it as a integer also. Okay, but here the data type is long. So for defining the data type explicitly, defining the schema and also the data type explicitly, we can use the struct type and struct field function. Okay, in Spark. So we also used to use this kind of schema as I used to use earlier after giving the column name, use the data type. But here we can't use for the nested schema, nested column. So I'll show you what is nested column. So for the nested column, we need to use this struct type and struct. So we'll see how to use it. Okay, so let's go. So first for using the struct type and struct field, we need to import it. Import PySpark dot SQL dot type. Okay, uh, import struct type. Then struct field. Sorry, this will be capital S. Okay, struct field. Okay, for example. So then we need to make the schema, okay, using the struct type and struct. So basically, struct type is a mm, combination of multiple struct field. Okay, so how to use it, we'll see. So first we'll take the struct type. Okay, after that in first bracket just define your struct field, means your column name and the data types of this column name in the struct field argument. Okay, struct field function basically take uh, the column name and its data type. Okay, it's like that. Okay, so first we'll mm, first what is our struct field. Okay, struct field, and in first bracket we need to pass our argument, the name of this column id. Okay, and after that is comma, its data type, mention its data type. Okay, data type equals to
We'll take integer. So before that we need to import the integer type and also string type. Now when machine intelligence is giving me the option. Okay, so let's type it and after that I'm done. So in this way you need to define your schema. Okay, बस whatever your columns are there, तुम बस उसको import कर लो. ओके, तुम बस उसको यहाँ पे दे दो स्कीमा में. एंड स्ट्रक्चर के अंडर में स्कीमा हमारे यहाँ पे जो कॉलम नेम है, कॉलम नेम पे कॉलम नेम दे दो और उसके बाद उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दो, तो ये हो जाएगा. ओके, नाउ आई एम रनिंग सेल. So what is the error giving? Invalid syntax. Let's see. Okay, here it should be from by mistake. You can have to import from this package. We need to import this function. Okay, so let's run. Now I'm getting the data. तो यहाँ पे डेटा में क्या है, तो यहाँ पे आई डेटा स्कीमा में आईडी इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग है, रोल इंटीजर है, तो ये चेंज हो गया. तो अभी ये तो हम लोग इससे भी कर सकते थे, आईडी नेम एंड अगर यहाँ पे मैं सीटी का यहाँ पे रोल करके यहाँ पे इंटीजर लिख देता, यहाँ पे इंट लिख देता, तो आराम से ये हो जाता. ठीक है, ऐसे करके भी हो जाता. जो मैं मेरा अर्लियर वीडियो जो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ. ठीक है, पर ये फंडा हम लोग क्यों यूज करें? ये फंडा बेसिकली एक कॉन्क्रीट कोड के लिए हम बेसिकली डेवलपर ये इसको यूज करता है. और whenever we are using complex what I can say this nested column structure basically, so that time we need to use this struct type as struct. So let's see what is the nested column structure. So basically in name we have first name and second name. So there we need, if we need to define it like that first name and second name, then what we need to do, we'll see. If we have the data like this, if you assume that we have the data like this. Okay, so we have the surname also. So if our data is like this, first name and surname, first name and surname, so in this case how we need to define the schema, that we will need. Okay, this is called nested schema because we have one schema, ID, name and roll number, and under name there will be one schema, first name and second name. So in this way we need to create one schema. First that name schema. Okay, so what will be this, and I'm just copying it from here. Okay, just paste it here and to close the brackets. Okay, so here just mention it, if name, and L name. Okay, so for this data
we have defined the schema here. Okay, so now how to import it here? So for importing it here, we need to define the data type as name string. नाउ हो गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये पूरा जो यहाँ पे नेस्टेड डेटा है इसका भी, ये नेस्टेड डेटा है इसका स्कीमा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और ये पूरा पूरा जो डेटा है इसका स्कीमा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो नाउ रन इट वंस अगेन, लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या एरर है। ओके, तो मैंने ये कॉपी करके लिया था, तो यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करना भूल गया, तो चेंज कर देते हैं। या फिर ये स्ट्रिंग टाइप होगा फर्स्ट में। तो लेट्स रन इट। तो ये देखो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे नेम जो है, नेम कॉलम, नेम कॉलम का जो ऑब्जेक्ट है इस, ये स्ट्रक्ट टाइप ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर टाइप। ओके, इसके अंडर में एफ नेम आता है, फुल नेम आता है। तो एफ नेम फर्स्ट नेम का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, लास्ट नेम का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। ओके, तो ये ऐसे करके आता है। अगर मैं इसको डिस्प्ले करके देखूंगा तो और भी समझ में आ जाएगा। We will use the display function here, so it will be like this, showing you। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम यहाँ पे करके भी देख सकते हो। ये नेम कॉलम का ये एक एक ऑब्जेक्ट करके आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंडर में ये एफ ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एल ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट नेम का राम, सेकेंड नेम का ये साहा बोल के इसका सरनेम आ गया। तो ऐसे करके ये नेस्टेड जो कॉलम होता है, नेस्टेड कॉलम क्रिएट करने में बहुत इजी हो जाता है ये स्ट्रक्चर एंड फील्ड टाइप कॉन्सेप्ट से। ओके, so I think you understood the concept. Okay, if you have any doubt, just please you can comment on the video comment section. Okay, and if you like this video, please do like, share, and subscribe our YouTube channel. Okay, our YouTube channel Cognitive Coders, and continuously uploading the videos in sequence. Please go and watch the videos, and please subscribe our YouTube channel because your support is very much required to us. Okay, thank you for watching our video. Bye.